Moving on to now some other stories. In the latest update, a 3-year-old boy named Mayank Suryanchi has died of kidney failure after consuming the cold reef cough syrup. The child, who was from Padchar, Umreti, had received an initial treatment from Dr. Amit Thakur of Parasia. His post-mortem is underway in Nagpur, and the death toll from the fake cough syrup cases has now risen to 22. So clearly in the morning it was 21, and now we are seeing that the death toll has increased to 22. Joining me on the broadcast is my colleague Chetan. Chetan, एक और मौत की खबर आ रही है कंटैमिनेटेड कफ सिरप की वजह से। I believe we do not have Chetan on the line with us. We'll try to get him back on the story. However, we have to understand that 22 innocent lives have now been lost due to this contaminated cough syrup. All right, Chetan, हमें खबर मिल रही है कि एक और 3 साल के बच्चे की मौत हो चुकी है गुजरात में। उन्हें परासिया में ही ट्रीटमेंट मिली गई थी। बिल्कुल, देखिए देर रात एक खबर और सामने आई है कि कल मौत का आंकड़ा जो 21 था वो अब देर रात से एक और बढ़ गया है। एक 3 साल के मासूम की फिर मौत हुई है। परासिया में उसका इलाज चल रहा था। अब संख्या कुल मिलाकर 22 पहुंच गई है। इधर एसआईटी की टीम भी कांचीपुर पहुंची है और जो फार्मेसी कंपनी के मालिक हैं उनकी कंपनी एसआईटी के द्वारा गिरफ्तारी कर ली गई है और अब उन्हें तमिलनाडु कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद रिमांड पर उनके लिए छिंदवाड़ा लाया जाएगा। राज्य सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है और अलर्ट मोड पर रहने के साथ साथ कफ सिरप प्रदेश भर में बैन किया था और 2 कफ सिरप की जो रिपोर्ट आई थी उनको भी अब बैन करने की तैयारी में। इसके अलावा 18 से ज्यादा जो इंदौर की फार्मासिस्ट कंपनी थी उस पर भी अब सरकार बैन लगाने की तैयारी में है। तो कहा जा सकता है कि बच्चों की जान से खिलवाड़ ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। ड्रग कंट्रोलर ऑफ मध्य प्रदेश ने भी चिंता जाहिर पूरे प्रदेश भर में अलर्ट जारी किया है। जहां भी इस तरह के ड्रग सैंपल लिए हैं वो सैंपल लिए जा रहे हैं और जो जहां पर भी स्टॉक मिल रहा है उस स्टॉक को सील किया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार ने भी चिंता जाहिर की है। आईएमए ने भी जो है पूरे मामले को चिंता जाहिर की है। तो कहा जा सकता है कि इसको पूरे ट्रेजेडी के तौर पर बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। टीम गठित की गई है जो टीम समय समय रहते हुए पूरा सीएम हाउस को हर चीज को अवगत करा रही है। जी धन्यवाद चेतन। In some more inputs, the government of Telangana Drug Control Administration has now released a press note alerting the public against the use of 2 cough syrups, Relife and Respi Flesh TR. The reports from the drug testing laboratory have declared that the syrups are adulterated with diethylene glycol, a highly toxic substance. The note also provides a toll-free number for reporting and informing any possession of the syrups. So clearly now the Telangana government also has swiftly moved into action. It has declared that there are 2 more cough syrups which were found with in fact contaminated substances. All right, that's all we have for you on this bulletin. We'll see you after a very short break.